All right. सबसे पहले माई सेल्फ इज आयुष, ठीक है, एंड आई एम अ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर ट्रेनर है. So today our topic is the future of web design. All right. So I would like to share two industry like VFX and double AIP. We have already running a course, VFX Prime and double AIP Prime. This is the latest course, and based on your interest you can join any courses like VFS, animation, web design. Based on your interest, I am pointing on interest because if you have an interest in animation, if you want to make an animated movie, 3D character, building construction website like map, or you want to make a VFX like you want to make VFX movie, so आप इस हिसाब से करियर ज्वाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं VFX के बारे में. तो इस पोस्टर को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? एवेंजर मूवी देखी होगी, लेटेस्ट है. कितने ने देखी है एवेंजर मूवी? लुकमान का हाथ क्यों नहीं उठ रहा? लुकमान ने नहीं देखी? सबसे पहले देखी होगी फर्स्ट शो. जतिन, आपने नहीं देखी मूवी? देखना मूवी, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे ये VFX का कमाल है. जो आप एवेंजर मूवी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें जो एलियन का जहाज है, शिप है, रियल में होगा कुछ ऐसा? नहीं, सारा कुछ जनरेटेड है. तो हम आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक VFX डिजाइन होता है, कैसे एक टीम में एक्चुअली इसमें काम होता है. इसमें आपका रोल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है VFX में, लेकिन VFX का यूज करके ये सारा कुछ बनाया जाता है.
traditional animation. You might call it 2D animation, but I actually place 2D in a different category, and you'll see why later in the video. Traditional animation, sometimes referred to as cell animation, is one of the older forms of animation. In it, the animator draws every frame to create the animation sequence, just like they used to do in the old days at Disney. If you've ever had one of those flip books when you were a kid, you'll know what I mean. Sequential drawings, screened quickly one after another, create the illusion of movement. Traditional animation consists of hand drawings, called frames. In the past, the drawing occurred on a big light table, which is basically a drafting table with a big light panel in the middle of it, on which the animator drew the sequence. The light enabled the animator to see his previous drawings through the paper to get a better look of his animation. This is called onion skinning. Nowadays, even traditional animation is being done mostly on computers by using a tablet like the Wacom Cintiq. 2D or traditional animation is usually animated on 12 frames per second, with occasional faster actions animated on 24 frames per second. Japanese animation, however, is known to be animated on a lower frame rate in most cases. Next on the list is 2D animation. When I talk about 2D animation, I'm referring to vector-based animation, like the ones done in Flash. This style has become very popular in the last decade, with the increasing amount of people doing it due to the accessibility of the technology. Flash is cheap and easy to use. Such are other vector-based animation programs. The reason I place 2D animation in a different category is that in addition to the option of animating frame by frame, an animator has an option of creating rigs for the characters and then moving the body parts individually instead of drawing the character over and over again. After Effects allows you to create complex rigs for animation, or use the puppet tool to drag and move body parts around. These flexibilities give beginners more option when approaching animation, especially if drawing isn't their strong suit, unlike traditional animation where drawing skills are mandatory. The third type is 3D animation, also known as computer animation, or honestly just animation at this point, since this is the most common form of animation today, just like traditional animation used to just be called animation 30 years ago. 3D animation, however, works in a completely different way than traditional animation. They both require an understanding of the same principles of movement and composition, but the technical skill set is very different for each task. Like I've mentioned before, while in the past you had to be an amazing draftsman to be an animator, with computer animation that is not the case. 3D animation is more similar to playing with puppets rather than drawing. The animator moves the character in a 3D program with special controls that are connected to each body part, such as hands, elbows, lips, etc., and then sets a keyframe when all the body parts are in the right position. They proceed to move forward in time and move all these controls again to create another keyframe. The computer then calculates the journey the body parts is going through between each of those keyframes. A 3D animator will spend most of their time looking at curves that represent the movement of different body parts over time. Another big difference with 3D animation is that unlike traditional animation, the character's body parts are always present and should be taken into consideration. Let me explain. When animating in 2D, the character has to be drawn for every frame. When the character is viewed from the side, half of its body isn't shown and thus isn't drawn. It technically does not exist. It's drawn on a flat page, and there isn't really more to the character other than what the animator draws. With 3D though, the character's body parts always exist in the shot. Even when one hand isn't visible, it's still there. That adds some work for the animator, since we need to be aware of the entire character at all times. The last major difference with 3D animation is the frame rate. Like I said before, traditional animators usually work on twos, which means they draw a new drawing every 2 frames, and thus having one drawing lasts for 2 frames. With 3D animation, however, the motion is always smooth, except for stylized pieces which intentionally try to look different. Having a character stop completely looks like a mistake in 3D. Even when the character is standing still, there should always be some sign of life. This is something 2D animation can get away with much more easily than 3D. Number 4 on our list is motion graphics. While still considered a form of animation, motion graphics is rather different than the other types of animation on the list. Mostly because unlike the other types, it is not character or story driven. It is the art of creatively moving graphic elements or text, usually for commercial or promotional purposes. Think animated logos, explainer videos, app commercial, television promos, or even film opening titles. The skills for motion graphics don't necessarily translate to the other types of animation, since they don't require knowledge of body mechanics or acting, but they do have some attributes in common, such as understanding good composition and the all-important camera motion.
Last but not least is stop motion. Stop motion is a special form of animation that combines live-action filmmaking principles with traditional character animation. Stop motion is done by taking a photo of an object and then moving it just a little bit and taking another photo. The process is then repeated, and when the photos are played back one after another, they give the illusion of movement. This is similar to traditional animation, but it uses real-life material instead of drawings. Let's look at some different styles of stop motion. One of the most popular forms is claymation, working with clay or Play-Doh characters that can easily be manipulated for animation. Advanced claymation, as seen in the Neverhood or Army Krog, uses metal skeletons on which the clay is then molded for more sturdy rigs. Some animators would use regular puppets instead of clay ones, usually also built upon some sort of skeleton rig. The faces of the characters can be replaced based on the expressions or be controlled within the rig. Another popular form of stop motion is cutout, using construction paper or cardboard characters and placing them on paper while shooting the animation from above. That's how South Park was originally made before they switched to computers. Similar to cutout animation, silhouette animation uses cardboard or some kind of flat material, but the objects are all dark and the shot is depicted with silhouettes only. This is one of the oldest forms of stop motion and is rarely used today. Some use action figures or Lego characters for animation. This genre is very popular on YouTube, with many channels dedicated to creating funny skits with Lego characters. Robot Chicken is a great example of that. They use famous action figures to make fun of pop culture. Then there's pixelation, a form of stop motion that uses real people and real environments to create unreal videos. It uses the stop motion method of taking a still photo, moving things around and then taking another photo, but the subject matter is usually real people instead of puppets. Alright, so now you know all about go to the market that you are coming from doing a course which done a web course, but you have no idea about that. So even if you're not learning the complete thing, you should just know about stuff or the industry and so even for that, this will be informative for you. And rest other careers also you get to know once you study about all these things. And interest or doing a course, that is separate. That if you see something interesting, obviously it is there. But these are basically types of animation and stuff because GWDD people will be doing Flash animation or something like that, right? So that will be there in your course. So one part you learn, okay? But then there are so many other things which are available. Okay? So how can they are going to be useful to you or not? Like you're going to learn or not? That is separate. But knowing the industry that VFX is there are different types of animations with faces. Motion graphics is coming up really well because if you are doing animate, then you can always add After Effects to it because that will make you enter into a different field of motion graphics also meaning. So all these options are there. So they tell you. Plus I think it's going to take off web and Yes, ma'am. इसके बाद वेबसाइट की बात website and all that things is also there. But all this is information basically which you have to just know besides just doing a web design or just doing a printer publishing or just doing a short film. इस This is regarding that. ओके जैसे मैम ने बताया कि देखो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं है, हम चाहते हैं आपको सीधे वेबसाइट के बारे में बताते। देखिए हमने आपको इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन इसलिए दी क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करती हैं। हम GWDD के हम वेबसाइट के हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ वेबसाइट इंडस्ट्री बहुत फार है, हर जगह वेबसाइट नजर आएगी, आपको वेबसाइट में बहुत स्कोप है। ये सारी इंडस्ट्री भी है। मैन आपका इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट इस एरिया में है तो आप इनको भी ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हैं क्योंकि लाइक आप कोई वीडियो यूट्यूब पे फेमस करना चाहते हैं, आजकल देखते हो कितने प्रैंक वीडियो आते हैं, वीएफएक्स का एडिटिंग करके हम उसको बना सकते हैं इजीली। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर क्या क्या आखिर आप क्या करना चाहते हो। जैसे जो फेसबुक है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की जो वेबसाइट जो ज्यादा पॉपुलर है उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। अगर वो आगे तक का नहीं सोचता, कुछ करना है, आगे कुछ बनाना है, कुछ इन्वेंट करना है तो नहीं करता। आज आप उसे यूज नहीं कर पाते, कोई और बनाता उसे, कभी ना कभी कोई ना कोई तो बनाता। तो आपको भी ये चीज सोचनी है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको हम इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये भी एग्जिस्ट करती है हमारी रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, और इसमें भी हम काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेन थिंग है आपका इंटरेस्ट। प्रोग्रामिंग है तो ऑलवेज वेलकम इन वेबसाइट क्योंकि वेबसाइट में तो हम टोटली प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आप
टीवी में देखते होंगे, मूवी में देखा होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे होते खट 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 खट। यहाँ पे वही काम होता है। आपने देखा आज डेमो प्रोग्रामिंग का? जैसे आपने फेसबुक देखा, व्हाट्सएप, गूगल और बहुत सारी जितनी वेबसाइट आप देखते हो नेट पे, आप क्या यूज करते हो? क्रोम, फायरफॉक्स। कितने लोग क्रोम यूज कर रहे हैं? काफी नंबर यूजर ज्यादा है और फायरफॉक्स, फायरफॉक्स यहाँ से आता है हमारे पास भी। ये काफी पॉपुलर है। तो ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है, एक सॉफ्टवेयर है जिनका यूज करके हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। हम करते क्या है? बेसिकली नेट पे जाते हैं, मतलब कि ब्राउजर पे ओपन करते हैं, ब्राउजर के एड्रेस बार पे टाइप करते हैं वेबसाइट का नाम, जैसे ही लिखा है एंटर, वैसे ही वेबसाइट सामने हाजिर। तो आखिर हम सॉफ्टवेयर का यूज करके कर रहे हैं ना। और वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, तो वेबसाइट का नाम टाइप किया, वेबसाइट सामने आ जाती है। आपको जैसे गूगल आपने देखा होगा, गूगल लिखा होता है, बॉक्स होता है, सर्च की बटन होती है। फेसबुक में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट में, ये कहलाता है फ्रंट एंड। टेक्निकल टर्म में हम इसे बोले तो इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कैसे बनता है? और उसके बाद बैक एंड भी होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन होकर आपके सामने आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये कैसे होता है? वो बैक एंड से होता है। मैन अभी हम यहाँ पे देखेंगे फोकस फ्रंट एंड, जो आपको दिखाई दे रहा है सामने यूजर को, लाइक लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, फेसबुक का लॉगिन फॉर्म, जीमेल का लॉगिन फॉर्म, जीमेल का ईमेल वाला एरिया, जितना भी कुछ आप देख रहे हैं वेबसाइट में, सारा का सारा फ्रंट एंड है। वो फ्रंट एंड हम सीखते हैं कैसे उसे डिजाइन करें। उसको डिजाइन करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और जब हम फ्रंट एंड की से कोडिंग सीख जाते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जतिन? फ्रंट एंड समझ में आ रहा है क्या होता है? फ्रंट एंड जैसे नाम ही है फ्रंट एंड, जो हमें सामने दिखाई देगा वेबसाइट में, जो भी कुछ हमें दिखा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे हमने गूगल पे जैसे हमने सॉरी क्या हो गया, ओके, जैसे हमने वेबसाइट पे जाके टाइप किया, वैसे ही हमें वेबसाइट सामने दिखाई देने लगती है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा होता है उसका पार्ट हम डिजाइन करते हैं वेबसाइट से। वो हमारा कहलाता है फ्रंट एंड। और जब हम फ्रंट एंड अपना पोर्शन कंप्लीट करते हैं, तो जो हमें जॉब भी मिलती है इससे रिलेटेड ही मिलती है। लाइक आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको वीएफएक्स आर्टिस्ट की जॉब नहीं मिलेगी, आपको वेबसाइट डेवलपर की ही जॉब मिलती है। तो हमारे पास अभी हाई पेइंग कैरियर में 2018 के हिसाब से हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, पीएचपी डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके की जॉब आपको इजीली इस फील्ड में मिल जाएगी। लेकिन इस फील्ड का यूज करके हमारा काम केवल कितना है? हमें डिजाइन करने हैं कोई से भी लेआउट, ऐसे डिजाइन तैयार करने हैं जो हमारे टैबलेट, टीवी, मॉनिटर, मोबाइल तक में भी चल जाए। और उस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए हम इस तरह के टूल्स यूज करते हैं। हर टूल की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था फर्स्ट में, अगर आपको लोगो बनाना है और आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोलर ड्रॉ के बारे में जानते हैं, 3 सॉफ्टवेयर जानते हैं, आपको लोगो बनाना है तो आपको फास्ट और कम समय में बनाना है, तो किस में बनाओगे आप? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? कोलर ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में से अगर आपको लोगो बनाना है तो किसको प्रेफर करोगे? कोलर ड्रॉ और इलस्ट्रेटर, और कुछ फोटोशॉप भी यूज करेंगे। रीजन, उन्होंने फोटोशॉप में ज्यादा अच्छे से कमांड सीखी है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, उसको उन्हें उसे फोटोशॉप यूज करना कंफर्टेबल है, तो फोटोशॉप में भी लोगो बना देंगे। ऐसा नहीं कि फोटोशॉप में लोगो नहीं बनेगा, बन जाएगा, उसमें भी काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में भी बन जाएगा, इलस्ट्रेटर में भी बन जाएगा, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होंगे जिसमें ज्यादा फास्ट बनेगा। लाइक हमारे ख्याल से इलस्ट्रेटर ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा लोगो के ऊपर, बहुत आसानी से हम लोगो बना सकते हैं। फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। कोरल ड्रॉ में है तो, लेकिन टूल्स थोड़े से कम पड़ जाएंगे। लेकिन इलस्ट्रेटर तो काफी अच्छा काम कर रहा है, उस पर हम आराम से बना, मतलब फर्स्ट नंबर पे इलस्ट्रेटर, सेकेंड कोरल ड्रॉ, थर्ड आ जाएगा फोटोशॉप। 3 टूल है, तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से वो टूल हम यूज करते हैं। वैसे ही वेबसाइट डिजाइनिंग में हमारे पास अलग अलग टूल होते हैं जिसका यूज करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट में जितने टूल आप यूज करोगे, वेबसाइट उतनी अच्छी बनेगी, उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। तो नॉर्मली आप इस तरीके की वेबसाइट जो मोबाइल पे भी ओपन हो जाए और लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी ओपन हो जाए, एक वेबसाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई देती है।
उसको हम इस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्राम बहुत छोटी सी होती है, मेहनत होती है पहले बनाने में फर्स्ट टाइम, फिर वो बाद में ईजी हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी हम एक वेबसाइट अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन दिख रही है आपको, ये लाइव एप्लीकेशन है। इसका एड्रेस बार पे जाके आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। ये लाइव एप्लीकेशन है और वन टाइम आप ओपन करेंगे, सेकेंड टाइम ये आपके मोबाइल पे ऐप की तरह दिखाई देगी, और थर्ड टाइम जब आप ओपन करेंगे तो बिना नेट के भी ये चलेगी। ये एप्लीकेशन हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है। अब जैसे हमने जो वर्बली आपसे बात की कि फ्रंट एंड होता है, इतने प्रकार के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, उसी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगेन इंग्लिश में है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना होगा, इसके पॉइंट समझने की कोशिश करनी होगी। कुछ ना कुछ पॉइंट टच करेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि वेबसाइट इस तरीके से बनती है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। loves problem solving, and looks forward to working with creative projects, then front-end development sounds like the perfect career opportunity that you may have been looking for. Before we learn some more about what a career in front-end development has to offer us, let us first find out what it really is. Front-end refers to the part of the web that you can see and interact with. Basically, the websites. Modern-day websites feature advanced navigation capabilities, user interaction features, and multimedia. Loves problem solving and looks forward to working with creative projects, then front-end development sounds like the perfect career opportunity that you may have been looking for. Before we learn some more about what a career in front-end development has to offer us, let us first find out what it really is. Front-end refers to the part of the web that you can see and interact with. Basically, the websites. Modern-day websites feature advanced navigation capabilities, user interaction features, and multimedia that are built using code written in HTML, CSS, and JavaScript. HTML and CSS are the building blocks of web coding, without which websites will simply feature unformatted plain text on the screen. JavaScript helps by letting you add a ton of functionality to it. Furthermore, JavaScript frameworks like AngularJS help give a ready-made structure to the code. Now let us explore the history of web development. Until a couple of decades ago, websites were nothing more than raw HTML documents, and it was around that time that world's first website was created by CERN. A few years later, CSS was developed to provide style to these very web pages. This was followed by the arrival of JavaScript that assisted in building dynamic and interactive websites, a lot like what we see today. Now, let us look at what the future of web development looks like and why you should learn it. A bright hiring landscape, lucrative salaries, and job flexibility are good enough reasons to consider a career switch to front-end web development. Did you know that the web development job market is expected to grow at a whopping 20% per year till 2022? This is faster than the average for all other occupations combined. In addition to that, according to Glassdoor, the median salary of a front-end developer averages at around US $75,000 a year. And with experience and added expert skills, one can expect a median salary that can start at US $100,000 per year. So, does front-end development sound awesome enough for you to take the ऑलराइट, सो अभी आपने फ्रंट एंड के बारे में देखा। इसमें ये दिखाया कि इसमें वेबसाइट जो हिस्सा दिख रहा होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड बनाने के लिए हम अलग अलग टूल्स लाइक जावास्क्रिप्ट इसमें दिखाया। इसमें बताया कि इंटरेक्टिव के लिए लाइक उसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि रन टाइम में हम चेंजेस कर सकते हैं। बटन पे क्लिक किया, कुछ पॉपअप आ जाए, चलता फिरता स्लाइडर दिखाई दे, क्लिक करें इमेज चेंज हो रही है, इसे हम स्लाइडर कहते हैं वेबसाइट में। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं। एंग्लोजेस के बारे में दिखाया। इसमें आपको फिर ये भी दिखाया कि क्या स्कोप है। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है अवर वेब डिजाइन प्रोसेस। वेब डिजाइनिंग की आखिर एक प्रोसेस क्या होती है, कैसे एक वेबसाइट बनती है, उसके बारे में। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक वेबसाइट बनती क्या है, उसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। वेबसाइट के टू पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ठीक है, तो बैक एंड हम इस तरीके से बनाते हैं, जो भी सामने दिख रहा होता है यूजर को, वो सॉरी वो फ्रंट एंड होता है। वो फ्रंट एंड बनाते हैं अलग अलग टूल से। बैक एंड के लिए भी अलग टूल है। फ्रंट एंड के हमने सारी डिजाइन बनाई मोबाइल के साइज के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे आप लोग समझते हैं, तो अगर आप हमें एक एप्लीकेशन बनाने के लिए दे रहे हैं कि जैसे आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाहोगे बताओ जतिन। ये अच्छा पॉइंट है। कहने का मतलब है कि कई बार से पानी गिर गया, लाइट बंद, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए फिर हमें बंदे ढूंढने पड़ते हैं कि भाई कहाँ पे मैकेनिक, उसको बुला के लाओ। उनके भी भाव काफ़ी हाई होते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता। प्रॉब्लम तो होती है ना, पंखा खराब हो गया, क्या होता है एसी, या फिर आपका कूलर या लाइट कूलर कूलर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बताते हैं मैकेनिक। अब उनको ढूंढो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे के पास जाओ, उसे ढूंढो। और देखा जाए तो अगर थोड़े से छोटे पैमाने पे देखें तो ज़्यादातर लोग कृषि करते होंगे। कृषि खेत खलिहान समझते हैं ना। हाँ, खेत खलिहान वो करते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड जो भी उनके इक्विपमेंट होते हैं उन्हें सर्च करने की प्रॉब्लम होती है। और अच्छी जगह से लाना, वर्कर की प्रॉब्लम होती है। जब जो भी वो करते हैं, एक्चुअली हम ज़्यादा स्पीड से नहीं थे, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उनको उस सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है। सपोज हमने आपको एक वेबसाइट दी है कि आपको एक वेबसाइट बनाना, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, ये आप सभी के लिए है। ठीक है, पीछे से 3 तो फर्स्ट टॉप पे है आप लोगों के लिए भी है ये वेबसाइट। आप लोग को हमने बोला एक टॉपिक है, हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह हमें इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम होती है, हमें बंदे ढूंढने पड़ते हैं, कोई मिल जाए, हम उसे अपने फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्यूशन कर पाए। तो इस तरह की वेबसाइट के लिए आप क्या, किस तरह की वेबसाइट बनाओगे, क्या ऑप्शन रखोगे, क्या सबसे पहले आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्या सोचोगे उस वेबसाइट को बनाने के लिए, कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, इस पर्पस से बनाना। पर्पस समझ में है क्या पर्पस है? ठीक है, तो उस पर्पस के लिए आपको वेबसाइट बनाना है। तो वन बाय वन स्टेप आप कुछ फॉलो करोगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तभी वो कंप्लीट होता है। अगर हम सडनली कुछ बनाना स्टार्ट कर दें तो कभी भी एंडिंग पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर किसी भी फील्ड में, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट को एंडिंग तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन एंडिंग तक नहीं जा पाता वो प्रोजेक्ट। तो उस केस में उसे एंडिंग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। तब एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है वो एंड भी होता है। आप लोग खुद ही रियल लाइफ में टेस्ट करेंगे, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या फिर कोई पिक्चर या फिर लोगो या फिर कोई डिजाइन बना रहे होंगे, बनाते समय काफी प्रॉब्लम आती है और एंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बीच का हिस्सा काफी अच्छा चलता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हमें एंड तक पहुंचाना है तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो वेबसाइट में भी एक बंदा कोई वेबसाइट नहीं बना सकता। बना सकता है बिल्कुल, हम इसी तरह ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक वेबसाइट एक बंदा ही बना लेगा, पूरा सारा काम कर लेगा, लेकिन कंपनी में स्टेप बाय स्टेप होता है। उससे क्या होता है, उनको काम ज़्यादा फास्ट होता है। अगर एक बंदे से सारा काम करवाएंगे, उससे एसईओ करवाएंगे, उससे डिज़ाइन बनाएंगे, उससे मार्केटिंग कराएंगे। जैसे सपोज आप लोग एक डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, हम एक क्लाइंट हैं, हमने आपको प्रोजेक्ट दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बनाना है। तो आप क्या करोगे, अपने अलग अलग बंदों को हायर करोगे, उनको वो प्रोजेक्ट दोगे, वो टीम में मिलकर वो सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फास्ट बनेंगे। क्योंकि आप एक डिज़ाइन बनाओगे कि आपकी वेबसाइट, आपका एप्लीकेशन इस तरीके से दिखाई देगा, आप फिर हमें दिखाओगे, हम उससे अप्रूवल देंगे कि हाँ हमें एग्जैक्टली यही वेबसाइट चाहिए है। वो डिज़ाइन आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का या फिर वेब लेआउट जिससे हम बना सकते हैं इजीली, उससे बना के आपने हमें दिखाया, फिर हमने अप्रूवल दिया, तब आपने से डेवलपमेंट वाले बंदे के पास भेजा कि इसकी आप डिजाइनिंग तैयार करो रियल लाइफ वाली HTML CSS के थ्रू। उसमें हमारा टाइम बच जाता है। अदरवाइज आपने HTML CSS का यूज करके वेबसाइट बनाई, डिजाइन बनाया, फिर आपने हमको दिखाया, हमने बोला नहीं हमें ये पसंद नहीं आ रहा, चेंज करो, फिर कोडिंग करोगे, टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे अलग अलग बंदे बैठे होते हैं। हमने आपको टॉपिक दिया है कि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, पवन आपसे हम पूछेंगे ऐसी एक एप्लीकेशन बनानी है
जिसका यूज करके पर्टिकुलर हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम पता है कौन सी है? वो इलेक्ट्रिक वो बंदे ढूंढना है, मैकेनिक, जो हमारे घर पे आके सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। तो इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है। तो कैसे, क्या स्टेप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे बताओ? आपके पास टीम भी, हमने आपको टीम दे के रखी, कोई एक एसईओ का बंदा है, एक कोई ग्राफिक्स का बंदा है, कैंडिडेट है, अलग अलग हैं जो आपके साथ हेल्प में टीम में काम करेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो शायद यही होगा कि जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसके बारे में डीप से डीप जानकारी निकालना कि क्या क्या फंक्शनलिटी हमारी वेबसाइट में होंगी, आखिर वो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन क्या काम कर रही होगी। एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, वो वेब पे चलने वाली, एंड्रॉइड पे चलने वाली, कोई भी हो सकती है, काम तो एक ही रहेगा सबका। तो किस तरह से डिजाइन करेंगे, यही सारी प्रोसेस होगी। पहले हम सोचेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका डेटा निकालेंगे कि आखिर एग्जैक्टली हमें बनाना क्या है। जहाँ पर पूरा डेटा है कि हमें ये चीजें बनानी है, पॉइंट समझ रहे हो ना? ये आप लोगों के काम में आएगी, GWDD वालों के लिए स्पेशली ये काम में काफी अच्छा आएगा, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट इसी तरीके से बनाओगे। लुकमान एंड पवन, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली वेबसाइट बनाते समय हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ये सारा कुछ हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसकी डिजाइनिंग बनाते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, और फिर फाइनली हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। तो इसी चीज़ों को हमने वीडियो के थ्रू समझाया है। आप एक बार से चेक करो। हाँ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी सारे रूल फॉलो करेगी। अलग अलग बंदे होंगे जो ग्राफिक्स का काम कर रहे होंगे, वो आपको एक लेआउट बना के देते हैं। वो लेआउट वो क्लाइंट से अप्रूव होता है। क्लाइंट ओके करता है उस लेआउट को कि हाँ ऐसी वेबसाइट हमें ड्रॉ करनी है, तब आपके पास वो लेआउट आता है और फिर आप उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो GWDD वाले हैं, हमारे पास काफ़ी सारे लेआउट हैं, वो उसी लेआउट को देख के वो पूरा एज इट इज लेआउट बनाओगे भी। जैसे आपने देखा ना पिक्चर में, वो पिक्चर हम आपको बना के देंगे।
आपको उसको देख के वेबसाइट बनानी होती है। डिज़ाइनर का यही काम होता है, उसको एक इमेज मिलेगी, उस इमेज को देखते हुए से एग्जैक्टली वैसी की वैसी वेबसाइट बनानी होती है। इससे काम ईजी हो जाता है डिज़ाइनर का। एक्चुअली आपको एक टॉपिक देंगे कि आपको एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन बनानी है, तो आप डिज़ाइन सोचने में ही टाइम लगा दोगे, किस तरह के डिज़ाइन, होम पेज कैसे दिखेगा, उसके बाद फिर कौन सा पेज आएगा, उसमें ही टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो वो टाइम आपका हम बचा रहे हैं, हमने ग्राफिक्स से डिज़ाइन करा लिया कि, और क्लाइंट से अप्रूवल है, उसमें अलग अलग टीम है जो डेटा एनालाइज करके पूरा डेटा तैयार करी कि इस तरीके की वेबसाइट बनेगी, वो आपको डिज़ाइन करके आपको वो लेआउट दे देते हैं। बस आपका काम है उसे रियल लाइफ में कोडिंग के थ्रू एक्टिवेट करना। तो ये हमारा फ्रंट एंड और डिज़ाइनर का काम होता है। और ऑलराइट, सो एक्चुअली ये एज अ वेब डिज़ाइनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसका जस्ट हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आखिर ये एज अ वेब डिज़ाइनर के फील्ड में रह के काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड पे है, क्या ये किसी कंपनी में रह के काम कर रहे हैं या फिर घर से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ एक्सपीरियंस ये अपना शेयर कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, फिर अगेन पुश हो जाओ। I build websites and I both do the creation on the front end and I do the programming on the back end. A client will contact me to build their website and we'll exchange communication about what they're looking for. And once they're ready to start, I do the design. They either approve it or they get back to me with some changes and I make those changes. And then after that, I spend a couple of weeks coding out the site. Then the site goes into a staging environment so that the client can take a good view of it, what it'll look like on the real web. And once everybody's happy, it goes, I put it into their hosting environment and we're done. I work for myself and I work at home. I am absolutely making more money now than I was as a full-time employee, which I think is great because I like to spend it. Working for myself means that I can pick my kids up from school. I can go and bring them to the beach on a sunny summer day. I can work on the beach if I want to. I can take these awesome vacations. I don't have to ask anybody for vacation time. I go when I need to. I schedule it. Drawbacks of working for yourself, cash flow is a big one. There's a lot of times that clients don't pay on time and I have to chase them. That takes time out of my day. Part of the offset of working at home is that I have my kids at home with me. So there's times that they want to be in the office with me while I'm working, and that's very challenging when you're trying to speak to a client. I think that communication skills are really important, that you have to be able to talk to your clients and be able to listen to what they really do want. It's important to have a little bit of business sense, so you have to know how to manage your money. You have to have the drive to work as hard as you need to, because when there's a project deadline, there's nobody there helping you unless you pay them. And if you want to finish the project on time and make the client happy, then you have to work more hours. If there's one job that I see a huge future for, it's the web and anything that has to do with the web, whether that be social media or interactive marketing, building websites, designing websites. There's so much opportunity out there for people on the web. And had I realized back in 1996, 1997, just how big it was going to be, I probably would have educated myself even more on what was possible, because there's an endless amount of work available. I'll never starve. Do what you love. You spend so much time at work, and if you don't love it, then you won't enjoy your life. हमारे पास जितने भी आपने देखा एनिमेशन, डबल जो भी कंप्यूटर से रिलेटिव कोर्सेज हैं, सभी में रिस्पेक्टिव जॉब है। इसके अलावा बाकी जॉब तो आप देखते ही हो रहेंगे, बेसिकली होटल में
या फिर मॉल में जाते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट देखते हैं, वहाँ के लोग कैसे क्या काम कर रहे होते हैं, उनसे तो काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाती है, रिस्पेक्टिव जॉब जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और जिसे ये हमारे वेबसाइट के बारे में था, वेबसाइट के इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मेनली हमारी वेबसाइट रन होती है इंटरनेट में। तो आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि इंटरनेट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या, आप लोग इंटरनेट के बारे में समझते हैं, इंटरनेट यूज भी कर रहे होंगे अभी फोन पे, क्या होता है इंटरनेट? आखिर हमारी वेबसाइट नेट पे चल रही होती है, तो आखिर नेट क्या है, इंटरनेट है क्या, कैसे हमारी वेबसाइट काम कर रही होती है? एक जस्ट सिंपल लाइन में इंटरनेट क्या है, पवन? नो आइडिया? सो गेट आइडिया, idea cheesy you can buy. Look man, what is internet in your opinion? Yeah, it is the acronym of World Wide Web. okay, this is a definition come from World Wide Web, www, and another definition is, yes, connection of networks. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक हमने ब्रांड बना के रखा है कि ये इंटरनेट, इस चीज़ को, जैसे हमारे पास ये 2 प्रोजेक्टर हैं, 2 मॉनिटर, लैपटॉप है, इसको हमने पूरा एक ब्रांड नाम दे दिया इंटरनेट। तो ये ब्रांड है इंटरनेट, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जैसे हमने इस लैपटॉप को कनेक्ट करके रखा एक वायर से, तो हमारे में नेट आ रहा, और ये वायर कहाँ पे कनेक्टेड? किसी स्विच से। स्विच कहाँ से कनेक्टेड है? दूसरे राउटर से। राउटर कहाँ कनेक्टेड है? यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकले किसी खंबे से जहाँ पे राउटर लगा हुआ दूसरा, फिर वो राउटर कहीं और किसी बिल्डिंग से गया हुआ, मतलब सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। आपके पास 2 लैपटॉप है, आपस में कनेक्ट कर लिया, आपस में दोनों इंटरनेट शेयर कर। इंटरनेट क्या है? जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप इंटरनेट में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो एक दूसरे को। यहाँ पे इंटरनेट में इंफॉर्मेशन शेयर करने का सबसे ईजी और फास्टेस्ट वे कौन सा है? आप लोग देख रहे होगे, जैसे आप जो वेबसाइट यूज करते हो, गूगल यहाँ की कंपनी नहीं है, गूगल का सर्वर कहीं और होगा, गूगल की वेबसाइट कहीं और होगी, सब कुछ बाहर का है, लेकिन आप इंडिया में रह के, इस लोकेशन में रह के एक्सेस कर पा रहे हो। कैसे पॉसिबल है? सारा कुछ कनेक्टेड है। अगर कहीं से भी कोई केबल कट जाए तो उतना इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सारा कुछ नेटवर्क है, कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, www, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनेट? Maybe this video will help you understand what is internet, right? So don't get sleepy. For Lukman and I think Rajesh are also going to sleep, no? Why you're going to sleep? Just grow your interest to know about it. Do you know about what is internet? You know, sometimes you are using, but you not exactly know about what exactly internet and how it is come from, what is the history behind the internet. So this type of thing I am going to tell you about, right? So now you can tell someone what is exactly internet. I think you are saying something, na? You are? Yes, it's actually a World Wide Web, and it gives you the opportunity to connect with the whole world. Yes, connect to the whole world. So okay, so just take a look in video and gain some information, right? After that I will ask someone what is the internet. What is the internet? The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I picture in my head with like waves of internet going to the phone. Somebody told me a cloud once. The internet is a lot like plumbing. It's always moving. Most people don't have any idea where the internet came from, and it doesn't matter. They don't need to. It's sort of like asking who invented the ballpoint pen or the flush toilet or, the zipper. These are all things we just use every day. We don't even think about the fact that one day somebody invented them.
So the internet is just like that. Many, many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the internet. It was a result of another experiment called the ARPANET, which stood for Advanced Research Projects Agency Network. It was a Defense Department research project. Paul Barron was trying to figure out how to build a communication system that might actually survive a nuclear attack. So he had this idea of breaking messages up into blocks and sending them as fast as possible in every possible direction through the mesh network. So we built what eventually became a nationwide experimental packet network, and it worked. Is anybody in charge of the internet? The government controls it. Elves, obviously elves. The people who control the Wi-Fi, because then no Wi-Fi, no internet. T-Mobile, Xfinity. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Right? The honest answer is, well, nobody, and maybe another answer is everybody. The real answer is that the internet is made up of an incredibly large number of independently operated networks. What's interesting about the system is that it's fully distributed. There's no central control that's deciding how packets are routed or where pieces of network are built or even who interconnects with whom. These are all business decisions that are made independently by the operators. They are all motivated to assure that there is end-to-end connectivity of every part of the network, because the utility of the net is that any device can communicate with any other device, just like you want to be able to make phone calls to any other telephone in the world. There's nothing like this that has ever been built before. The idea that what you know might be useful to somebody else, or vice versa, is a very powerful motivator for sharing information. By the way, that's how science gets done. People share information. So this is an opportunity for people to think up new applications, maybe program them as apps on a mobile phone, maybe become part of the continued growth of the infrastructure of the network to bring it to people that don't have access to it yet, or just make use of it on a day-to-day basis. You can't escape from contact with the internet, so why not get to know it and use it?